Students, as you all know, exams are approaching. We are going to take online test, and so I have decided to revise this chapter. This was the first chapter from physics that we had learned at the starting of the year. Okay, at the starting of academic year, we had started with this particular chapter, and lot of days have passed in between. And since in exam also this chapter will be there, okay, it is better that we revise this chapter. So as you know, it is chapter number 8 of the textbook. Now what I'm going to do is, first I will remind you what all topics we did from the lesson. So we dealt with the introduction of the chapter, then describing the motion, then we also studied about motion along straight line, and difference, or what we can say, yes, difference between uniform and non-uniform motion. Then we also studied about measuring the rate of motion, speed and velocity, motion along straight line, and then finally the big topic that we studied was graphical representation of motion. This was quite big. Okay, so all these topics we had covered in the chapter motion. Now what we are going to start with today is some important points, or the points that should be remembered from this chapter, that we are going to start with, and also couple of problems, or you can call it as numericals, we will solve it. Okay, so let us start with the first point. The first point says that to describe the motion we need to describe the position of the object. Very important. Okay, if we want to describe a motion, what we need to describe is, we need to describe first its position of an object. Okay, I will repeat, to describe the motion we should first describe the position of the object. It's very important. Okay, because from this point the entire chapter starts. Okay, so it's very important point. Second, to describe position we ought to specify a reference point, because if we want to describe a position, okay, then we have to specify the reference point. This reference point is nothing but origin. It is called as origin. So to describe motion we should describe position, and to describe position we should specify the origin. Okay, so you should remember this. Okay, next, the actual path covered by the body is called distance. जो actual path होता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ से निकला, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से निकला और मैं आया अंजन मिल तक, तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है. ओके, तो ये सब का एक्चुअल पाथ में अगर मैं मेजरमेंट ले लूँ तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस. लेकिन अगर मैं मेरे गांव को और अंजन वेल को डायरेक्टली ज्वाइन करूँ एक स्ट्रेट लाइन से, तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट. ऑल्सो वी हैव टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन. मैं अंजन वेल से मेरे गांव आ रहा हूँ या गांव से अंजन वेल जा रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट में. ओके, सो I will repeat, actual path covered by the body is called distance and shortest path possible is called displacement. Okay, however distance and displacement have same units. मतलब क्या है, distance और displacement दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनका जो यूनिट्स है वो सेम है. दे हैव सेम यूनिट्स. ओके, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. मतलब क्वांटिटी भी अलग अलग है. ओके, उनका मीनिंग भी अलग अलग है. डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है. ओके, बट स्टिल देयर यूनिट्स आर सेम. Let us see another points. Okay, now here we have tried to cover uniform motion. What is uniform motion? When object covers equal distance in equal interval of time, it is called as uniform motion. Example of this can be taken as a car. If car covers 60 kilometers in first hour, another 60 kilometers in second hour, again 60 kilometers in third hour, and so on, if it continues to cover same distance, okay, then the motion is called as uniform motion.
Okay, whereas when the object covers unequal distance in equal interval of time, then it is called as non uniform motion. मतलब equal interval of time में अलग अलग डिस्टेंस अगर वो बॉडी कवर करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. ओके, इसका एग्जांपल हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी का दे सकते हैं. एग्जांपल ऑफ द बॉडी freely falling under gravity, okay, has a non-uniform motion. Why? Because it covers unequal distance in each second. हर सेकेंड में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है. So that is non-uniform motion. Let us see next few points. Graphs provide a convenient method to present basic information about variety of events. Okay, so graph एक बहुत अच्छा टूल है, though it is mathematical tool, but you all know how useful is mathematics in physics. मतलब without mathematics I cannot imagine physics. फिजिक्स फिर तो सिर्फ डेफिनेशंस रह जाएंगे फिजिक्स में. ओके, मैथमेटिक्स है इसीलिए उसमें मज़ा है. ओके, वी कैन प्रूव लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग मैथमेटिक्स. ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट विदाउट मैथमेटिक्स आई कैनॉट इमेजिन फिजिक्स. दैट्स इम्पॉर्टेंट. Okay, so that much importance mathematics has in physics. Well, so graph is a very important mathematical tool, especially to describe the motion of an object. The change in position of an object with time can be represented on distance time graph. अगर मुझे पोजीशन का चेंजेस नोट डाउन करना है तो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ करूँगा. वी कैन यूज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, इन केस ऑफ, this is very important point, in case of uniform motion distance time graph shows a straight line. मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन है, वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा. whereas if it covers अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रहेगा, कर्व्ड लाइन रहेगी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Well, now that we have covered important points, I would like to discuss couple of numericals for you. So first problem, an object travels 16 meters in 4 seconds and then another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of the object? I will repeat the question for you. An object travels 16 meters in 4 seconds and then another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of the object? हमको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है. what we have to find is average speed of the object. Now students, it's very simple. what we have to do is we have to start with distance. डिस्टेंस से स्टार्ट करना है. दोनों डिस्टेंस ऐड करो. 16 + 16 कितना आएगा, 32 मीटर्स. एंड देन टाइम ऐड करो. 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड कितना आएगा, 6 सेकेंड. एंड देन यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मतलब 32 मीटर्स डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड कितना आएगा, 5.33 meters per second. So that's how we calculate average speed. Now let us see next question. Speed time graph of a car is given here. इधर दिया है speed time graph. Using the data in the graph, calculate total distance covered by the graph. तो ग्राफ का यूज़ करके हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. So here we will start by first observing the graph. क्या क्या दिया है, इधर स्पीड है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर टाइम है, तो स्पीड वर्सेस टाइम है. वेल, फॉर्मूला फॉर स्पीड वी ऑल नो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इस कर्व के नीचे, इस लाइन के नीचे का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा. ओके, तो स्पीड और टाइम मल्टीप्लिकेशन मतलब एरिया हमें कैलकुलेट करना है लाइन के नीचे वाला. वेल, इन दिस केस फाइंडिंग आउट एरिया अंडर द लाइन AF विल गिव अस टोटल डिस्टेंस. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. तो एरिया कैसे निकालोगे, इधर दो शेप्स है, इधर नीचे रेक्टेंगल है, इधर ट्राइंगल है, तो दोनों का एरिया कैलकुलेट करो. ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. रेक्टेंगल का भी एरिया मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो दोनों कैलकुलेट करो. तो इधर आएगा हाफ मतलब 0.5 इंटू 50 इंटू 25, और इधर आएगा 5 इंटू 50, बिकॉज दीज आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल. तो मल्टीप्लाई करने के बाद 625 और 250 आता है, और इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलता है, 875 मीटर्स. सो दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार.
So these are few methods to calculate certain parameters from the problem. Well, still I will suggest, after having this revision, you read the entire chapter, okay, because questions can come from any part of the lesson, so you have to be thorough with the lesson. But still, these are few important points and some numericals just to give you an idea about this lesson. Okay, so that was all for today. I hope you understood today's chapter. Thanks for attending this session. See you in the next session. Until then, take care. Bye bye.